This question is from IIT Kanpur 2023. Let's see this problem. The weekly wage of workers of a factory follows a normal distribution with mean 400 and standard deviation 50. Okay. So we have a random variable wages that follows normal distribution with mean 400 and variance would be 50 square because standard deviation is 50. Further, if the wages of 80 workers are less than 350, then the approximate total number of workers in the factory is. अगर 80 workers की salary, the wages, if it is less than 350, then what would be the approximate number of total number of workers? Okay, so how should I write this information कि 80 workers की जो wages है वो less than 350 है? Well, since normal distribution is involved, so obviously we are dealing with some probability. So what I can do is I can write this information as the probability of wages being less than 80, less than 350 is 80 workers की है, so favorable number of cases is 80 and total number of outcomes that's n. So 80 out of n workers की जो के wages it is less than 350. Okay. Now I need to figure out this probability to find the value of total number of workers. Okay. So for that, obviously normal distribution given है तो आपको इसे normalize करना पड़ेगा. And for that, what we'll be doing is this minus mean divided by standard deviation. So that will normalize this random variable. Less than, we have to do this both sides. So 350 minus mu, that's 400 by sigma, which is 50. This is equal to 80 by n. Okay? So now this is normalized, so I can write it to be z less than, this is minus 50 divided by 50, which is minus 1. So this is equal to 80 by n. ओके, तो वैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, और लेकिन आपको फिर भी इंफॉर्मेशन गिवन है दैट 0 to 1 की रेंज में अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव 0.34%, यू हैव 34% एरिया. ओके, सो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यूज 68, 95, 99.7% रूल जो होता है. अकॉर्डिंग टू दैट, दिस इज z डिस्ट्रीब्यूशन -1 और 1 के बीच में this whole area is 68%. Okay, if this area is 68%, then this area would be 34%. तो 0.34 यहाँ पर है और 0.34 यहाँ पर है. क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 0 से 1 के बीच में दैट्स 0.34. तो अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ यूजिंग दिस रूल. और बेसिकली अगर ये क्वेश्चन का आप यूज करो तो 0.34 उसने यहाँ पर राइट में दिया हुआ है 0 to 1 के बीच में. तो यूजिंग सिमेट्री यू कैन से दैट, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, तो यहाँ भी 0.34 ही होगा. Okay, anyways, you have to find out the probability for z less than -1, which is this. ये तो obviously this area to the left of 0 would be 0.5, क्योंकि टोटल 1 होता है, सिमेट्रिक है, तो 0 के लेफ्ट में 0.5, 0 के राइट में 0.5, और -1 और 0 के बीच में 0.34 है. तो which means probability of z less than -1 would be 0.5 minus 0.34. ओके, तो विच इज 0.16, आपको मिल गया है 0.16. और ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1 इज इक्वल टू 80 बाय n. So this is equal to 0.16. So using this, we can now find out the value of n, and n will be equal to 80 upon 0.16, which is 500. Okay, so total number of workers in this factory will be equal to 500. That's it.